आज हम डिस्कशन करेंगे अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंस 22. ऑलराइट, choose from the following compounds to answer the questions below. Each of these compounds can be used once, more than once, or not at all. Give a compound which is an acidic atmospheric pollutant from volcanic eruption. Volcanic eruption से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो एसिडिक गैस होती है. Now the next is a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon is C3H8, which is your propane. Dissolves in water to form an aqueous solution which gives a white precipitates on addition of aqueous sodium hydroxide. अगर dissolve हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जिंक सल्फेट होगा, और क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है, इसका मतलब जिंक सल्फेट इज द राइट आंसर. Reduces iron-3 oxide to iron in the blast furnace. आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये हमारे पास गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड. Contributes to the process of eutrophication. Eutrophication की contribution कर रहा है वो, तो obviously nitrates and phosphates होगा. यहाँ पर हमारे पास phosphate है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम phosphate. ठीक है. इसके बाद है आपके पास farmers add fertilizers such as ammonium sulfate to the soil to increase the rate of plant growth. Write the formulae of the ions present in ammonium sulfate. एक तो होगा आपके पास ammonium ions और एक होगा आपके पास sulfate ions. Just type a test for ammonium ions. Ammonium ion के टेस्ट के लिए कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें और हीट करें. Add sodium, aqueous sodium hydroxide, heat करें. Pungent gas is given off, which turns damp red newspaper blue. Which turns damp litmus blue. When ammonia dissolves in water, ammonium ions and hydroxide ions are formed. Write the ionic equation for the reaction of aqueous ammonia with sulfuric acid. अगर मैं aqueous ammonia को sulfuric acid से reaction करवाऊं तो acid based reaction होगा basically, right? और जब भी acid based reaction होता है उसकी ionic equation मैंने आपको बताई है, हमेशा ये होगी H plus ions, OH minus ions, ROH2. सही है. अब सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आयंस होते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 बना दीजिए. ऑलराइट. नेक्स्ट, the alkanes are a homologous series of hydrocarbons. State 2 properties of homologous series. बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप्स होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला. Same chemical properties.
draw the structures of a branch chain and unbranched alkane having 4 carbon atoms. यानी वो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 4 कार्बन एटम्स का एल्केन है which is your butane, और वो कह रहा है उसके स्ट्रक्चर ब्रांच चेन अनब्रांच एल्केन सब बना के दो, यानी आइसोमर्स बना के दो. ठीक है, तो अनब्रांच्ड ब्यूटेन 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन एटम से. अनब्रांच्ड एल्केन्स में क्या होगा, 1 2 3 है, एक ब्रांच लगाएंगे यहाँ पर which is 2 methyl propane. ठीक है, उन्होंने हमसे कहा था शो ऑल द बॉन्ड्स एंड ऑल द एटम्स, तो हमने डिस्प्लेड स्ट्रक्चर लिखा है सबके लिए, सारे बॉन्ड सारे एटम्स शो किए हमने. Okay, next is the graph shows how the melting point of the first 9 unbranched alkane vary with the number of carbon atoms per molecule. Describe how the melting point of these alkanes change with the number of carbon atoms. तो आप बताइए, as number of carbon atoms increases, molecular mass increases, strength of van der Waals forces increases, melting point increases, right? Generally it increases as number of carbon atoms increases due to the fact MR increases so van der Waals forces increases. ओके, आप नोट करें 4 और 5 में भी डेविएशन है. ठीक है, 6th and 7th में भी डेविएशन, तो डेविएशन है यहाँ पर, राइट? वो स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से डेविएशन हो रहा होगा. Use the graph to estimate the melting point of the unbranched alkane which has 10 carbon atoms. बेटा estimate करने के लिए कह रहा है. Use the graph to estimate the melting point of unbranched alkane which has 10 carbon atoms. 10 carbon atoms का melting point क्या होना चाहिए? बेटा -25 से -50 के रेंज में होना चाहिए. सही है, -20 to -50. बिल्कुल रेंज लिख सकते हैं, एस्टिमेट करने के लिए कह रहा है ना, तो यू कैन प्रोवाइड एनी रेंज. कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ पेंटेन. पेंटेन इज C5H12. कंबशन करवाएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. How many oxygen atom here? 10. 10 plus 6, 18, right? तो 18 करने के लिए मैं यहाँ पर 9 प्लेस कर दूं, तो 10 plus 16 है, तो 8 कर दूं, 16. Name the product of the incomplete combustion of pentane and explain why the incomplete combustion of hydrocarbon is hazardous to health. तो जाहिर सी बात है, आप बताएंगे
कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है व्हिच डिस्ट्रॉय द हेमोग्लोबिन। Which destroyed the hemoglobin. नहीं, बी स्पेसिफिक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिलीज होती है तो वो क्या करती है, ठीक है। नेक्स्ट, propane reacts with iodine to form colorless product. The reaction is catalyzed by hydrochloric acid. ये important बात है। The table shows how the relative rate of this reaction changes when different concentration of propanol, iodine, and hydrochloric acid are used. Describe how increasing the concentration of each of these substances affects the relative rate of reaction. So जब concentration increase होगी, देखिए जरा, आपने प्रोपेनॉल की कंसंट्रेशन को डबल किया, इनिशियल रेट भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है ना। तो आप लिखिए as concentration of propanol increases, rate also increases, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन को देखिए, ये तीनों की तीनों कंसंट्रेशन सेम है, राइट, लेकिन रेट चेंज हो रहा है, isn't it? इसका मतलब आयोडीन की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लिख दीजिए नो इफेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं मैं, सही है, नॉट सेम, ये देखो इंक्रीज हो रही है, रेट भी डबल हो रहा है, या हाफ कर लो, अगर हाफ कर रहे हो तो रेट भी डबल हाफ हो रहा है, एक ही बात है। जब कंसंट्रेशन डबल होती है रेट डबल हो, कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हो रेट भी हाफ हो जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सेम चीज है। यानी रेट, कंसंट्रेशन ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, कंसंट्रेशन कम रेट ऑफ रिएक्शन कम, ठीक है। सो आप यहाँ कह सकते हैं कि देखो इसको और इसको देख लो, है ना, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब मैं 1 और 3 को नहीं ले सकता, मैं हमेशा किसको लूंगा, 2 एंड 3 को, क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, रेट भी चेंज हो रहा है, सही है। तो हम इन दोनों को देख के बात करेंगे, तो हम लिखेंगे as concentration increases, rate of reaction increases. Increasing the temperature increases the rate of this reaction. Explain why in terms of kinetic particle theory. जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रैंडम मोशन इंक्रीज होगी, जब रैंडम मोशन इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव कोलिजन इन अ यूनिट टाइम इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, kinetic energy increases, collision frequency increases,
more molecules have energy greater than activation energy. ठीक है. Iodine has several isotopes. What are isotopes? Same number of protons and electrons, but different number of neutrons. Astatine is a halogen. Aqueous iodine reacts with aqueous acetylidines to produce astatine. Construct the ionic equation for this reaction. Easy. ये है 2-acetylidine reacting with iodine, converting into astatine At2 plus 2 iodidines. स्टेट सिंबल्स नहीं मांगे इसलिए मैं स्टेट सिंबल्स नहीं लिख रहा हूं. ठीक है. Next, aqueous hydrogen iodide reduces hydrogen peroxide to water. Explain how iodide ion acts as a reducing agent in this reaction. यहाँ पर iodine की oxidation state -1 है, यहाँ पर iodine की oxidation state 0 है. तो during the reaction iodine जो है वो oxidize हो रहा है. इसका मतलब वो खुद क्या होगा? Reducing agent. या आप ये भी कह सकते हैं कि during the reaction it loses electrons, क्योंकि तमाम reducing agents दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. जब वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे. loses electron during the reaction. Next, nickel carbonyl reacts with hydrogen iodide. Calculate the percentage by mass of nickel in nickel carbonyl. Guys, सबसे पहले MR of nickel carbonyl calculate करो. Okay. 28/4 प्लस निकल का मास कितना है? निकल 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 पीरियोडिक टेबल होना चाहिए. $59 171. तो हम देखेंगे बेटा 171 ग्राम. ठीक है. तो निकाल के दिखा देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता. 59 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28/4, इट बिकम्स 171. ठीक है बेटा. हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं? परसेंटेज बाय मास ऑफ निकल. तो बेटा निकल का मास कितना है? 59. निकल के कितने हैं हमारे पास? फॉर्मूले में 1 into 1 करूंगा, डिवाइडेड बाय 171 into 100. बताइए आंसर क्या आ रहा है? 0 पॉइंट into 100 भी तो होगा ना बेटा. 34.5%. इसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट the maximum volume of gas formed at room temperature and pressure when 1.71 gram of nickel carbonyl reacts completely with hydrogen iodide. Okay, तो सबसे पहला काम moles of nickel carbonyl निकालते हैं. मास दिया हुआ है 1.71, उसको डिवाइड कर दीजिए 171 से. तो बताइए मोल्स कितने आ जाएंगे?
0.01 moles. Okay, according to the equation, निकिल कार्बोनाइल और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान रेशियो कितना है? 1:4. तो ये आ जाएगा निकिल कार्बोनाइल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 1:4. कोई और तो गैस नहीं है ना? ये भी तो गैस है, तो इसके भी तो मोल हो गए, तो 5 मोल्स हो जाएंगे। बेटा इस तरह से कर लें इसको। चलो मैं पहले देख लिया मैंने। गैस, टोटल गैसेस कितनी हो जाएंगी? 5 मोल्स। तो अगर आपके पास 0.01 मोल है तो बताइए मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा आपके पास? 0.05 moles. Okay. 1 mole equals to 24,000 cm3. तो अगर आपने 0.05 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताइए कितना वॉल्यूम होगा? ट्वेल्व हंड्रेड cm3. ठीक, यहाँ लिख दीजिए 1200 cm3. The structure of nickel carbonyl is shown. ये निकल कार्बोनाइल है। इस स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि इसमें सारे के सारे ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सही है? प्रेडिक्ट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ निकल कार्बोनाइल। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी कि क्योंकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। और बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास? जाहिर सी बात है ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें फ्री मोबाइल आयंस अवेलेबल नहीं होंगे, व्हिच मींस इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे the proton number and accurate relative atomic masses of cobalt and nickel are shown in the table. ये प्रोटॉन नंबर हैं कोबाल्ट और निकल के, और ये उनके relative atomic masses हैं। Suggest why cobalt has a higher relative atomic mass than nickel. अगर इसका relative atomic mass ज्यादा है तो इसका मतलब आइसोटोपिक मास भी ज्यादा होगा, यानी greater proportion of isotopes होंगे इसलिए इसका AR भी ज्यादा है। तो बताइए निकल cobalt has greater proportion of isotopes in the sample as compared to nickel. An aqueous solution of hydrogen iodide is a strong acid. What is mean by the term strong acid? Fully dissociated or ionizes in aqueous medium. Fully dissociated or ionizes in aqueous medium.
Sodium and rubidium are alkali metals. Explain how metals conduct electricity due to the presence of free mobile electrons. State two trends in the properties of the alkali metals. Alkali metals दो properties हैं, बताइए. पहला low melting and boiling point. दूसरा reactivity increases down the group. ठीक है. Name the products formed when rubidium reacts with water. जब कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है हमेशा हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनते हैं. तो आप बताएंगे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और नाम पूछ रहा है इसलिए बेटा हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते. सो ये हो जाएगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. Titanium is extracted from titanium 4 chloride by reduction with molten sodium. Suggest why sodium reduces titanium 4 chloride. क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी टाइटेनियम से ज्यादा है. Because reactivity of sodium is greater than titanium. The next is in the contact process, sulfur dioxide is made by the catalytic oxidation of sulfur dioxide. Closed container, the following equilibrium is set up. The reaction is exothermic. ये important बात है. Name the catalyst. तो आप लिखेंगे वेनेडियम 5 ऑक्साइड. बहुत से बच्चे इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा. ठीक है, वो भी एग्जामिनर गलत नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि वेनेडियम 5 ऑक्साइड आपका केम्ब्रिज का फॉर्मेट है तो उसी को फॉलो करें. ठीक है. Dot a dot and cross diagram of oxygen molecule show outer electrons only. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को शो करना है. ये भी ऑक्सीजन एटम है और ये भी ऑक्सीजन एटम है. इस ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 1 2 3 4 5 6. इस ऑक्सीजन के भी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 1 2 3 4 5 6. We have done these diagrams in chemical bonding का lecture. वहां लिखी भी ये सारी diagrams आपको याद होनी चाहिए. Oxygen belongs to group 6, so it has 6 valence electrons in the valence shell, right? तो मैंने sharing of electron करके दिखा दिया. आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन exhibit double covalent bond. जब भी मैंने 2 electrons of each element share together करके दिखाया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर में है, आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप लिखेंगे ये. The graph shows the percentage yield of sulfur dioxide at different temperature. ठीक है. Describe how and explain why the percentage yield of sulfur dioxide changes with temperature. जी. टेम्परेचर कम था, yield ज्यादा थी. ऐसा ही है ना? बोले yes or no? और जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, yield ड्रॉप हो रही है मुसलसल, isn't it? Why? Because reaction exothermic है, उसने ये कहा था ना आपको. तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो यील्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कम हो जाएगी. लिखो.
as temperature increases, causes the stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards left hand side, thus yield of sulfur trioxide decreases. ठीक है, thus yield of sulfur trioxide decreases. Okay, suggest why the reaction is carried out at 450 degrees Celsius and not at 250 degrees Celsius. जाहिर सी बात है, अगर मैं 250 डिग्री सेल्सियस पे करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, which is not productive for the industry, which is why we need a compromised temperature of 450 degrees Celsius, because at this temperature we'll get optimum yield and a high rate. तो लिखो at 250 degrees Celsius temperature is low, so rate of reaction is slow. So we need a compromised temperature of 450 degrees Celsius because at this temperature we'll get optimum yield and high rate. Describe how and explain why the position of equilibrium changes when pressure increases. आप देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2. हमने आपको बताया था कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड. तो लिखिए as pressure increases causes the stress in equilibrium to minimize this stress equilibrium favors towards right hand side because of less number of moles. Sulfur dioxide oxidizes hydrogen bromide to form sulfur dioxide, bromine and water. Construct the equation for this reaction. तो sulfur dioxide oxidize करता है hydrogen bromide को. तो sulfur dioxide है, hydrogen bromide से reaction कर रहा है. किसमें convert हो रहा है? Sulfur dioxide, sulfur trioxide है. ये sulfur trioxide है, HBr से reaction कर रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है ब्रोमीन एंड वाटर. बेसिकली आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सही है. नेक्स्ट
Propene nitrile is made by passing a mixture of propene, ammonia and oxygen over a catalyst of 450 degrees Celsius. ये equation given है. The reaction is exothermic. ये important बात आ गई. Draw an energy profile diagram. Your diagram should label product, reactants, enthalpy change and activation energy. याद रखिएगा exothermic reaction है. तो जब exothermic reaction होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, एंथैल्पी चेंज. तो रिएक्टेंट्स मेंशन करने मैंने, ये है जनाब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, और ये बनेगा प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट में क्या है? प्रोपीन नाइट्राइल व्हिच इज CH2 डबल बॉन्ड CH CN प्लस 3H2O. सही है बेटे? Propene nitrile decolorizes aqueous bromine. Explain why. Because propene nitrile contain double bond. Due to the presence of double bonded carbon atom. ठीक है, the structure of propene nitrile is shown. Draw the structure of the addition polymer formed from propene nitrile. तो बेटा मैंने आपको कहा था ना कि जैसे एग्जामिनर ने मोनोमर दिया है उसी तरह से लिखें. एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, half bond inside the bracket and half bond outside the bracket. The catalyst used is the addition to make propene nitrile in molybdenum. Molybdenum is a transition element. State 2 physical properties of molybdenum. Transition elements है तो high density होगी, high melting point होगी, variable oxidation state होगी. High melting point and boiling point, high density. ठीक है, molybdenum reacts with chlorine at room temperature to form molybdenum 6 chloride. ये फॉर्मूला आ गया. molybdenum 6 chloride has a melting point of this. melting point कम है, इसका मतलब ये simple covalent molecule बन रहा है. Construct an equation for this reaction including state symbols. molybdenum है NO, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है NOCl6 में. तो यहाँ फी लगा दीजिए. ये सॉलिड, ये गैस, और ये भी बेटा गैस होगा. मेल्टिंग पॉइंट कह रहा है तो इसका मतलब सॉलिड होगा ये. सही है ना? इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्ट उसी वक्त होगा जब वो सॉलिड होगा. सॉलिड मेल्ट होता है, लिक्विड तो मेल्ट नहीं होगा ना, गैस भी मेल्ट नहीं होगा.
both copper and magnesium are metals. Explain why magnesium reacts with hydrochloric acid but copper does not. Magnesium की reactivity high, copper की reactivity कम as compared to hydrogen. तो आप लिखेंगे while copper is less reactive, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास brass is an alloy of copper and zinc. The table shows the composition of brass influence its relative strength. How does the composition of brass affect its strength? अब नोट करें, जब परसेंटेज ऑफ जिंक इंक्रीज कर रहा हूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। सही है। तो आप लिखिए यहां पर as the percentage of zinc increases, relative strength also increases. Use your knowledge of the structure of metal to explain why brass is stronger than pure copper. You may include a diagram in your answer. तो भाई सबसे पहली बात नहीं, वो तो alloy हो जाता है। आप बताइए कि brass is an alloy containing two different metals. These metals have different sizes due to which layers of atom cannot slide over each other. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं वो आपसे प्योर कॉपर से ब्रास को, which means मैं यहाँ पर लगाऊंगा layers of atoms in copper can slide over each other. 3 मार्क्स का पार्ट था, इसलिए बेटा ये पॉइंट भी ऐड करना जरूरी था। कंपैरिजन मांग रहा है आपसे, ठीक है। You may include a label diagram in your answer. You may, जरूरी नहीं, आप चाहे तो बना सकते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिए ना।
सही है ना? Draw a label diagram to show how a steel rod can be electroplated with copper. जी, आपसे वो पूछ रहे हैं स्टील रॉड इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? ये आपके पास क्या है? बैटरी। यहाँ पर आप रियोस्टेट भी लगा सकते हैं, जिसको आप वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। ये क्या होगा आपका? ये आपका स्टील रॉड है और ये आपका इम्प्योर कॉपर है। ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। सही है। इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली कॉपर आप ऐड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट होना चाहिए। जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसी मेटल का आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। बेटा जरा कैलकुलेशन में प्लीज हेल्प कर दीजिएगा। सबसे पहले मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो यहां से। तो 11.09 को सब्ट्रैक्ट कर दो 9.86, 1.23 ग्राम। मुझे कॉपर का मास मालूम है which is 9.86, इसको डिवाइड कर दीजिए 64 से। मुझे ऑक्सीजन का मास मालूम है 1.23, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 से। बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.15, 0.07, 0.07 से दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। ये 1 हो जाएगा। 2.1 का मतलब 2। तो कॉपर आपके पास कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया Cu2O। नेक्स्ट, माय गुडनेस, और सारे क्वेश्चंस है भाई। A student prepared some crystals of hydrated copper to sulfate by reacting excess insoluble copper to oxide with dilute sulfuric acid. Describe how you would obtain pure dry crystals of hydrated copper to sulfate from the reaction mixture. तो बेटा मैं सबसे पहले रिएक्शन मिक्सचर को फिल्टर करूंगा। ठीक है जी, रिएक्शन मिक्सचर को फिल्टर करूंगा तो जाहिर सी बात है कॉपर, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट जो है वो फिल्ट्रेट होगा, जबकि ये क्या होगा आपका रेसिड्यू। सही है।
filtrate is present in the beaker. Evaporate the filtrate. Till crystallization takes place. Try the crystals on filter paper. The student used 15 cm cube of dissolve हो जाएगा वो दोबारा से. The student used 15 cm cube of 2 mole per dm cube sulfuric acid to prepare the crystals. Calculate the maximum mass of hydrated copper to sulfate crystal that could be made. तो मेरे पास कार्बन cm क्यूब में आपके पास 2.00 moles of H2SO4 है. अगर 15.0 cm क्यूब गिवन है तो बताइए मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? (0.03). MR of CuSO4.5H2O ये भी मैंने कैलकुलेट करके दिया है आपको लेक्चर के अंदर. अब चेक कर लीजिएगा मोल्स में कितना मास होता है इसका. 250. आप जानते हैं कि जो मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स इसके होंगे क्योंकि 1:1 का रेशियो है. तो मोल्स सेम है. MR मुझे पता है तो मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो मास ऑफ CuSO4.5H2O मोल्स है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 250. बताइए आंसर कितना होगा? (7.5 grams). Aqueous ammonia is added to aqueous copper sulfate until ammonia is in excess. What is observed as aqueous ammonia is added? जी, जब aqueous ammonia ऐड करते हैं तो ब्लू सॉल्यूशन मिलता है. और बताइए. एक ऐसे नहीं. 2 मार्क्स का पार्ट है ना. 2 मार्क्स का पार्ट है. कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है. Light blue solution to dark blue solution. जब हम कॉपर आयंस में एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है? सॉल्ट एनालिसिस में हम बताते हैं आपको प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं. तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स और फिर जब मैंने उस लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स में एक्सेस एक्वस अमोनिया ऐड किया तो फिर इट विल टर्न टू डार्क ब्लू सॉल्यूशन. सही. यहाँ लिख दीजिए इन एक्सेस एक्वस अमोनिया, इसलिए 2 लाइनें दी.
An aqueous solution of copper to sulfate is electrolyzed using inert electrode. Predict the product of this electrolysis at anode. Oxygen gas, cathode copper, okay, we are done with this paper.